Hi, I am Neha and you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? Hello everyone, welcome to Scrappy News. My name is Arya Praveen Londe. My name is Viti Viraj Visaukar and we today are going to discuss about rooftop farming. Viti, आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है? मेरा फेवरेट वेजिटेबल तो ब्रिंजल है और मेरा लेडी फिंगर है। आपको रूफटॉप के बारे में क्या मालूम है? हाँ, मेरे को रूफटॉप फार्मिंग के बारे में पता है। हम लोग रूफटॉप फार्मिंग हमारे छत के पर कर सकते हैं। उसके लिए पानी भी कम यूज़ करते हैं और हम लोग टोमेटो, ऑनियन, कैप्सिकम, कुकुम्बर ये सब चीज़ें भी उगा सकते हैं। और आपको और पता है उसके बारे में? उसको हम लोग उगा भी सकते हैं, खुद के घर में उगा रहे हैं और खा रहे हैं। और जब वो प्लांट वो बढ़ता है तभी निकालने भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगता है उसके बारे में? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तेरे को फार्मिंग करने को पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है? हाँ। My name is Manaswini and I manage this farm which is called Earthen Roots Community Farm. And the farm was it started in 2012 by a group of people, enthusiasts who wanted to cultivate this land. To cultivate this land into a beautiful landscaped thing. So we suggested them, we as in the group of people who started this, suggested that rather than growing something ornamental, flowers and all, why not go for an edible garden, which will also be green, which will also give you flowers and which will also benefit the cancer patients. So this was the idea behind it, and when we started it was a very small patch of 500 to 700 square feet of area. Hello everyone. So today we are talking about how to start your own kitchen garden at home or in your office premises or in your school premises for it. If you have ground space with you, absolutely amazing. But there are cities like Mumbai where you might not have ground space in your school or at your home. So you can do it easily in containers, right? So right in front of me, you will see there is a kitchen garden here. There is not like one kind of thing growing here. So there are multiple things growing together. Just like you might have gone to a forest or maybe a dense park where you will see a lot of trees growing together, a lot of bushes, a lot of grasses, a lot of weeds, flowers, right? And there might be some aromatic plants also that we might or might not know about. So right now, as we are talking about the ground space, so let me tell you what will you need to start your kitchen garden bed in a space where you have some ground space. So it can be a terrace also, it can be a lawn also if you have that. So first layer would be a lot of organic matter.
Now, what is organic matter? Twigs, branches of trees that you can find around from your school campus or from a park that is around you. You can go and you can take big bags and just go around, do this errand, run this errand. It will be like fun also. So collect lot of dry leaves, collect lot of dry twigs, branches, or like different kind of leaves, as diverse as possible. It would be better. 5 to 6 inches of that. Okay. So there is nothing like too much of organic matter. You can put as much as you want. So ऊपर का जो layer है, we need just 7 to 8 inches of soil. मतलब उसके नीचे का बाकी जितना आपका depth है, आप organic matter से you can fill it. Now the next layer would be, आप अपना local soil ले सकते हो, जो भी आपका local soil है, mix it with cow dung manure. So 50-50. But to grow vegetables, we need to give extra nutrition because vegetables are weakling of the नेचर. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो. इफ़ यू सी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से आप देखोगे यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट्स हैं. एक्चुअली मैंने भी काउंट नहीं किया अभी तक, तो लेट्स काउंट इट टुगेदर. ट्राई टू ग्रो एट एवरी लेवल. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग. हियर इफ यू सी, so you see a lot of basil here. These are different varieties of basil. This is sweet basil, this is Italian basil, other one is Thai basil. Then you'll see there's a lemongrass here. Lemongrass works as pest control, pest repellent, even so does the basil. Now you'll see there's a ground space पे, you'll see there, this is palak, regular palak है. नीचे all this is brahmi. Brahmi is a medicinal plant and a herb also. Different variety of palak which is called Ceylon spinach. So if you see this bed, you will not see one kind of thing growing here. We don't believe in monocropping because nature doesn't believe in monocropping. हम चाहते हैं कि बहुत सारे plants एक साथ हार्मनी में ग्रो हो. आप देखोगे कि जब आप ऐसे उगाओगे, एक not one thing but lot of things together, they will be happy, they will be more healthy और बहुत लंबी लाइफ चलेगी उनकी और पेस्ट अटैक भी नहीं होगा. क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली. अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम. आज का टॉपिक है वाटर टैक्सी. This is a boat that is moving from Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signals. यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं. आज का टॉपिक है वाटर टैक्सी. This is a boat that is moving from Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signals. यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं. आपने कभी की है घर में फार्मिंग? हाँ की है, हमारे टेरेस पे. हम आप भी करते हो? हाँ, मैंने तो हलद और आंवला, फ्लावर्स ये और टोमेटो वगैरह के भी झाड़ लगाया है. हमारे भी वैसे ही है. तो आपको एलोवेरा का प्लांट अच्छा लगता है क्या? हाँ, मैंने तो एक प्लांट के मैंने 10 प्लांट कर दिए. एलोवेरा इतना अच्छे से आता है. बेसिकली मतलब अभी हम लोग हलद का कर रहे हैं. सो हलद का थोड़ा छोटा सा पीस लेने का और उसमें मिट्टी में डालने का और उसको रखने का और टाइम टू टाइम पानी देने का. तो आपके घर में कौन सा वेजिटेबल्स का प्लांट है? मेरे घर में तो ऑनियन है, टमाटो है, मिर्ची है और आंवला और हलद का है. मेरे तो पूरे आजू बाजू के खिड़की में प्लांट्स है. हम लोग को प्लांट को अच्छा रखना चाहिए, टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए. उसको थोड़े जो लीव्स रहते हैं ना जो खराब होते हैं, वो उसको कट करना चाहिए टाइम टू टाइम. Hi, my name is Sarafina, Singapore. I'm originally from the US, from Colorado, and I moved to India because my husband is from here. And I've always been doing gardening, like from when I was a child, and from wherever I lived, I would try to grow things like either in windowsills or on balconies. And then in this
building, which is a tower in Worli, Mumbai. It's a 32-story building with 50 flats in it. We started doing waste segregation and composting in 2017. Then we had made all this compost, so we were thinking, what are the good ways to use it? And one of the residents suggested using an unused space at the podium level, which was meant to be for parking, but it wasn't being used for that. And it, our building is south facing and gets good sunlight in that area. So I did some research. I visited other gardens, other terrace gardens in the city, and there are a few of them. And I, did a lot of reading and also applied my experience. So in our garden, we mostly use bamboo baskets. So they're woven, locally by craftsmen. And they're inexpensive, and the bamboo is quite a sustainable material to make things out of because it grows quickly and without much water or care or inputs. And so that's why we chose the bamboo baskets. I got the idea from searching on the internet. So the liner is a cloth. It's called Geotextile. Unfortunately, that is like a synthetic material, but the good thing about it is that it lasts a long time, like many years. So the purpose of that is to hold the soil but let the water out. So because otherwise the soil would come out through the holes in the baskets, and also the baskets would rot quickly if the soil was in direct contact with them. So then as the soil mix for growing the plants, we use about equal parts soil, like red earth, which we had to get from outside. But maybe where you are, there might be a local source. But yes, we did need to order it from a nursery supply company. Then also we mixed in cocoa peat, it comes as a dry block usually, and then you wet it and you mix it into the soil. And then the third part is compost, which we make in our building. So compost it's a very important resource. It's a great way to recycle your kitchen waste and your garden waste, like dry leaves and all of that, into making fertilizer for your plants. So we do the composting in our building ourselves. And we save a lot of money by making our own compost, because you need to add that when you're initially mixing the soil, and then also periodically to feed the plants you need to add more compost. So the other day we did a little experiment with some of the children in our building, which was just to see the composition of our soil, like the basic physical composition of our soil. So we took one sample from one of the baskets, which had been there for like a year or so, where the ginger had been growing in that basket for the past year. We took a sample from there. Then we also took a sample of soil that we had just recently mixed. So that was just like with the red earth, cocoa peat, and compost. And then actually it'd be good to do a third one, which is just the red earth, and see what that consists of. So basically you take a jar, a biggish jar, you fill it like half or so with soil, or a little more than half. Then you fill it the rest of the way with water. You stir it well, and then you let it sit for like at least 24 hours so that it settles down. And then one step before that is that you remove any big pieces of stones and things like that from your soil as well before mixing it with the water. So water and soil mixture sit for 24 hours or so. Then you can see that the layers will form. So there will be sand on the bottom, then clay on top of that, and silt on the top of that. And on the top of the water, the organic material floats up to the top of the water. So you can measure those with a ruler, or with a measure or something, and then you would calculate the percentage of each in the soil. And then you can look up on a chart and see what category your soil is in. So it could be a very clay soil, or it could be loamy soil, which has a lot of organic matter and silt. And depending on that, you can, make decisions about how to, like, you might want to add some organic matter to your soil
to improve it if it's a very clay soil, for example. So you need soil that drains well and that has enough nutrients for your plants. The purpose of each of these materials is that the soil helps hold the plant's roots. It also provides the minerals. The cocoa peat helps make the soil looser, and it helps it to drain better. It also, it provides air pockets in the soil, because that's important for the plants to be healthy. And then the compost. This we made from kitchen waste and garden waste, which we composted. And then this provides nutrients to the plants, and it also helps improve the structure of the soil. So like the cocoa peat, it helps the soil to be looser, to drain better, and to have more air pockets in it. So all these components, this is what we use in container gardening. क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। आज का टॉपिक है वाटर टैक्सी। This is a boat that is moving from Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signals. यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं। आज का टॉपिक है वाटर टैक्सी। This is a boat that is moving from Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signals. यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं। हम लोग रूफटॉप फार्मिंग हमारे घर के छत पे कर सकते हैं और रूफटॉप फार्मिंग के ये भी फायदे उन लोग को पानी कम यूज़ होता है और हम लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती उसमें। हाँ, अब ये भी मज़ा आती है जब हम लोग के घर पे ही हम मतलब वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ये भी मज़ा आती है बहुत। हाँ, हम लोग के घर में खुद ही हम लोग रूफटॉप फार्मिंग करते तो बहुत मज़ा आती है। फ्लावर्स कैसे ग्रो करने के पता है? हाँ, मुझे पता है। फ्लावर्स वो कैसे ग्रो करेंगे। फ्लावर्स के सीड्स होते हैं, वो उसमें सैंड में डालने का फिर वो ग्रो होते हैं। ओके, पर हम लोग को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको टाइम टू टाइम पानी डालने का। चलते हैं रिपोर्टर के पास। हाय, मेरा नाम बेनज़ीर है और आज हम बात करने वाले हैं रूफटॉप फार्मिंग के बारे में। और आज मेरे साथ श्रुति हैं और उन्होंने अभी शुरू किया है रूफटॉप फार्मिंग। तो हम जानते हैं उनसे कि उनका क्या प्लान है। हेलो, हाय, मेरा नाम श्रुति है और मैंने काफ़ी सोचा है कि मैं रूफटॉप फार्मिंग प्लान करना चाहती हूँ बिकॉज इट लुक्स सो ब्यूटीफुल जैसे हम देखते हैं बाकी जगह पे, बट छोटे छोटे प्लान करके बहुत बोर हो गया है। तो अभी रूफटॉप फार्मिंग में कुछ टोमेटोज, कुछ पोटैटोज, कुछ ऑनियंस लगाने का सोच रही हूँ। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि रूफटॉप फार्मिंग प्लान कर रही थी क्योंकि मैंने देखा बाकी जगहों पे, जैसे हम बॉम्बे से काफ़ी दूर, मतलब हम तो बॉम्बे में रहते हैं बट बाकी जगह इट्स कि नेचुरल उगता है। तो आई प्लान कि वो हम रूफटॉप फार्मिंग पे उगाए ताकि वो देखे कैसे अच्छा लगता है। और देखा दोस्तों आपने कि यंग जनरेशन भी कितना इंटरेस्ट है उनको भी रूफटॉप फार्मिंग में। तो आप भी ये इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप भी ये कर सकते हैं। तो बी स्क्रैपी, बाय। रूफटॉप फार्मिंग के बेनिफिट बताओ। हाँ, बताओ। हम लोग ना हमारे छत पे रूफटॉप फार्मिंग कर सकते हैं और हम लोग हमारे पसंद का खाना भी वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं। हाँ, और जब हीट बढ़ जाती है तभी वो वेजिटेबल सड़ जाता है और जब फ्लड वाटर आता है, जब गिरता है तभी वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर रूफटॉप फार्मिंग को ये इफेक्ट नहीं करता है और हम लोग को उसको टाइम टू टाइम पानी भी डालना चाहिए। और जैसे कि रूफटॉप फार्मिंग को सिर्फ 1 kg वेजिटेबल के लिए सिर्फ 50 to 55 लीटर ही पानी यूज़ होता है। उसको रूफटॉप फार्मिंग को कम पानी यूज़ होता है और प्योर भी रहता है वो रूफटॉप फार्मिंग का जो हम लोग ग्रो करते हैं खुद। Hi, my name is Kritarth Upadhyay.
practice environmentally friendly farming. We raise awareness about it. And while I was doing wastewater treatment, I learned how much water is being wasted throughout. And at the same point of time, I came across hydroponics the first time in 2017, when I learned that there is a type of farming that uses 75% less water compared to traditional farming practices and is completely independent of the climate. So what happens in traditional farming practices, that is out on the land, it is dependent on the climatic conditions and mostly the monsoon and the temperature and the humidity. Over here in this room, we are controlling all of these factors. So irrespective of what's happening outside, these plants are catered to perfect conditions. Hence the growth will be unaffected and will be the best quality ever. So what we get outside is basically golden light, which is a mixture of all the 7 wavelengths with Geotextile. But upon close scientific study, we have observed that plants do not need all the wavelengths to grow. Specific wavelengths of blue and red are used to accelerate its growth, and even during fruiting time, when the plant is about to fruit, when we give it red wavelength light, it fruits better and faster. And white is to balance both so that it doesn't head towards a completely different new color. And that is why these specific grow lights, they emit certain temperature also, because temperature, moisture, humidity are essential factors for the plant to grow in optimum condition. This could go as big as somebody wants it to be, honestly, but the main advantage of hydroponics is here that it halves your land cost. So suppose you have a 1 acre farm and you go for traditional farming, you will go horizontally. Here you can divide the entire 1 acre farm by 1/4 and go vertically upwards. So you save on the land cost and a lot of other electricity costs, labor costs, a lot of their costs are solved by just shifting from traditional to hydroponic farming. रूफटॉप फार्मिंग को पानी कम लगता है क्योंकि एक केजी वेजिटेबल को सिर्फ 50 to 55 लीटर ही पानी लगता है। हाँ, और वेजिटेबल भी बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे ये है कि हमें हमारे घर पे रूफटॉप फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि हम हमारे मनपसंद वेजिटेबल ग्रो कर सकें। मैंने आज ये सीखा कि रूफटॉप फार्मिंग से प्योर वेजिटेबल ग्रो होते हैं। चलते हैं गेम खेलने। हाय गाइस, मेरा नाम है साध्वी विजय देवकर। आज मैं बता रही हूँ एक गेम, और वो गेम का नाम है वेजिटेबल सॉर्टिंग। और वो गेम मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसा खेला जाता है। वो 3 बॉक्स रहते हैं, उसमें सब वेजिटेबल्स मिक्स रहते हैं। एक टीम एक बॉक्स में वेजिटेबल्स डालेगी और उसके कलर्स वाइज डालेगी। अगर वो कलर्स वाइज नहीं डालेगी तो वो हार जाएगी, और जो टीम कलर वाइज डालेगी वो जीत जाएगी। और कौन जीता? और अभी पता नहीं, क्योंकि अभी हमने ही सबसे पहले खेला। हम ए टीम है और हमारी टीम 10% पॉइंट लाई है। तो अभी आगे जाके जो 2 टीम खेलने वाले वो जीतेंगे हारेंगे वो पता नहीं। जब उनका हो जाएगा फिर हम पता चलेगा स्कोर कैसे होगा। अच्छा, फिर आपको लगता है आप जीतोगे? पूरे विनर से मुझे लगता है मैं जीतूंगी। हम जीतेंगे, मैं नहीं, मेरी पूरी टीम जीतेगी। बच्चे तो सुपर हीरोज निकले, झट से सब कर दिया। और इस खेल के विजेता है टीम बी। इस गेम में हमें ये सीखने को मिला है कि वेजिटेबल्स कितने प्रकार के होते हैं और हमें इन्हें संभाल कर उगाना चाहिए। देखा दोस्तों, गेम कितना इंटरेस्टिंग है, सबको पसंद आया। और उन लोगों को भी खेलना है जो अभी खेले नहीं है। तो अभी बाद में देखते हैं। बी स्क्रैपी। मिलते हैं अगली बार। बी स्क्रैपी, बाय।